Hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss about Constituent Assembly. And this is important because I hope you are aware. So this body was actually there for making the Indian Constitution. So we will discuss in detail about it with the help of question and answer as well as theory. Plus, I will discuss some chapters or some portion of class 12 NCERT history book also because that will cover this topic comprehensively. ठीक है, तो हम लोग आज के क्लास में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानेंगे, कैसे बना, कैसे इलेक्शन होता था, फिर उसके बारे में फिर और हम लोग एनसीईआरटी बुक से रिलेट में जो जो चीजें मेंशन्ड है वो सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, बिकॉज आई फाइंड दीज टॉपिक्स टू बी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और इस पर बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आए हैं, है ना. आपने सुना होगा ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे. So ये सब चीजें questions आई हैं already. So that is why I will be discussing it. Am I audible, visible? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? If yes, then please write yes. देखो, अब मैं सबसे पहले reason बता दूं why I am discussing it. So the reason is very simple. अगर आप देखोगे, CLAT have asked question from history book. ये NCERT की बुक से क्वेश्चन उठा के दिया था. Nationalism in India and the Contemporary World, and NCERT book से. Similarly, if you have seen last to last year paper, they had asked a passage on Jallianwala Bagh massacre, है ना, जिसमें उन लोगों ने ये पूछ दिया था कि जनरल डायर का ओरिजिनल फुल नेम क्या है. So they had asked these types of questions also. इस तरह का क्वेश्चंस आ चुका है, वो पैसेज एनसीईआरटी बुक से उठा के पूछ रहे हैं. तो जो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट टॉपिक्स है उसको हम लोग यहाँ कवर करा रहे हैं. सो वी आर कवरिंग दोस प्रोमिनेंट टॉपिक्स हियर सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू इन द एग्जामिनेशन हॉल. ठीक है, इज इट क्लियर? एम आई ऑडिबल, विजिबल, एवरीथिंग इज फाइन? यस, गुड इवनिंग अनुषा. इज माय वॉइस रीचिंग? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? इज एवरीथिंग फाइन? द स्लाइड इज विजिबल? इफ यस देन प्लीज राइट यस. तो देखो, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आया था, सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर देखो क्वेश्चंस आया था, है ना, आप देख सकते हो. Civil disobedience movement, है ना. So predicament for Congress, what is civil disobedience movement, Dandi march. ठीक है, so ये सब पे क्वेश्चन आया था. ठीक है, तो है ना. So कैसे स्टार्ट हुआ civil disobedience movement? So it started by Dandi march and all, है ना. और major outcome of civil disobedience movement. So ये NCERT book से क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, and that is why I have decided to discuss in today's class Constituent Assembly. Plus in the last half or in the second half, I will discuss a chapter from history book also. ठीक है, which is linked with Constituent Assembly. तो हम लोग उस चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे जिसमें Constituent Assembly के बारे में डिस्कशन है हिस्ट्री की बुक से. ओके, यस. सो दिस इज Constituent Assembly, है ना, which is considered as a precursor of Parliament of India, ना. ठीक है, so that is what you should know. Yes, good evening, Pranshi Govill. You are also most welcome in the class. चलो, अब लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे तो सबसे पहले हम ये जानेंगे किसने ये आइडिया को ओरिजिनली प्रपोज किया था. सो द ओरिजिनल आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज प्रपोज्ड बाय डैश इन 1934. सॉरी, मोतीलाल नेहरू, जेएल नेहरू, सरदार पटेल, एमएन रॉय. अगर एक पर्सन पूछा जाए, व्हिच पर्सन इज क्रेडिटेड विद गिविंग द टर्म और talking about constituent assembly, that there should be a constituent assembly in India to make constitution etc. So which person has the credit for that? ये बहुत famous question है. These are asked in many government exams in PYQs. बहुत सारे previous year questions different standard exams में पूछे जाते हैं. What is the right answer? The right answer is option D. ठीक है, ये communist थे 1934 में, Mr. M.N. Roy. So the original idea of the Constituent Assembly was originally given by Mr. M.N. Roy in the year 1934. ठीक है, so arguing for a body to draft a constitution that truly reflect the aspiration of Indians. तो सबसे पहले उन्होंने ये बात कही थी, फिर बाद में कांग्रेस ने इसको अडॉप्ट किया etc. So that is what you should know. तो अगर पर्सन पूछा जाए, who was the first person to give the idea of Constituent Assembly in India? So the answer would be option D, M.N. Roy. ठीक है. अगर ये पूछा जाए, which of the following first mooted the idea of Constituent Assembly to frame a constitution? Following party, actually this we are talking about political party. अगर ये पूछा जाए कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे पहले टर्म इनिशिएट किया था, किस पार्टी ने ये प्रपोज किया था, तब क्या आंसर होगा? स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग in 1942, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस in 1946.
बताइए. So if I'm asking which person, so the answer would be M.N. Roy. And if I'm asking which party had first given this concept, which political party, so the answer would be option A, Swaraj Party. ठीक है, याद रखिएगा. Swaraj Party was actually a party within the Congress. They avoided a split. Actually हुआ क्या था, मैं थोड़ा सा Swaraj Party को मैं बता दूं. I'm sure you must have heard that non-cooperation movement was stopped by what? गांधी जी ने non-cooperation movement क्यों stop कर दिया था? Can anyone tell me? These are very famous facts. Gandhi ji stopped non-cooperation movement in February 1922. Why? What was the reason? ये सब पूछे जाते हैं, इस पर पैसेज आता है ना. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लास्ट ईयर पैसेज आया, हो सकता है इस बार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पूछ दें. They can ask. Chauri Chaura incident. Very good. You asked that. Right? Very good. So what happened was Chauri Chaura incident happened where 22 policemen got the entire police thana was burnt in Gorakhpur is a place today in East Uttar Pradesh where this incident happened. Yes, Anusha, you are also right. ठीक है. So उसके बाद गांधी जी ने क्या क्या स्टॉप कर दिया मूवमेंट. So just when this got stopped in February 1922, so within the Congress there were two opinions. ठीक है. इसके बाद इस इवेंट के बाद तो दो तरह के लोग इवेंट हुए. One is called as pro changes, है ना, and another is called as no changes. ठीक है. I'm sure you must have heard these terms. So pro changes जो थे वो कहे कि हम लोग we formed Swaraj Party. They formed Swaraj Party in 92, 23, 22, 23. जिसमें मोतीलाल नेहरू and C.R. दास थे. And they said कि now we will participate in elections process which were given by the British. इन लोगों ने कहा कि जो ब्रिटिश का इलेक्शन प्रोसेस है, जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का उस टाइम का इलेक्शन होता था, हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. नो चेंजर्स ने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, वी विल कंटिन्यू टू बॉयकॉट इट. ठीक है. तो उन लोगों ने दोज हु सपोर्टेड द आइडिया ऑफ फाइटिंग इलेक्शंस वेयर मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, देन विठाल भाई पटेल वाज देयर, सिद्धार्थ पटेल्स ब्रदर, सो दे वेयर पार्ट ऑफ स्वराज पार्टी. तो उन लोगों ने ओरिजिनली ये कॉन्सेप्ट दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. ठीक है. तो इन लोग स्प्लिट को अवॉइड करके थे. दे वेयर एक्चुअली अ पार्टी विद इन द कांग्रेस टेक्निकली. ठीक है. They avoided a split because 1907 में already split हो चुका था. So to avoid that, they avoided this split. ठीक है. So that is what you should know. Now let's move on to the next question. Constituent Assembly of India was formed on which date? 6 December 1946, 9 December 1946, 26 November 1946, 9 December 1945. What is the right answer? Form किस दिन हुआ था? Formed on. Question को गौर से पढ़िएगा. Please tell me. I'm waiting for the response. Everyone should answer it. अगर आपको नहीं भी पता है कोई बात नहीं, but try to answer. So the right answer is formed on 6 December 1946, and first meeting actually happened here on 9th December 1946. ठीक है. So the right answer is A is the right answer. Constituent Assembly जो बनी थी वो 6 दिसंबर 46 को बनी थी. Okay. Okay, so just remember it was formed on 6 December 1946 and first meeting held on 9 December 1946. Okay. Okay, the next is the Constituent Assembly was disbanded on which date? 26 January 1950, 25th January 1950, 1st January 1950, 26 November 1949. What is the right answer? Disband कब किया गया? Oh, people are saying 26 November 1949. No, actually it got disbanded one day before the first Republic Day. 25th January 1950 को disband किया गया. ठीक है. So just remember it. The right answer is because you are thinking कि इसमें तो सर बन गया था सर ये क्या कहते हैं constitution, so it must have been abolished, but no. The idea is it got abolished one day before the 6 December 1946 and 25th January 1950. Why? Because next day फिर उसके बाद फिर concept of parliament etc. came and all. तो देखो होता ये था, इसको थोड़ा सा जान लेना. Constituent Assembly से पहले कौन सी law making body थी? We had discussed during the British time. It was Imperial Legislative Council, है ना? ठीक है. फिर Constituent Assembly के बाद now we are having Parliament which makes laws. ठीक है. ठीक है. That is what you should be knowing about. And a Parliament of India was established. Now the next is which of the following was the interim president of Constituent Assembly? या पूछा जाएगा first president of Constituent Assembly. Then what should be the answer? Because शुरू में जो बनाए थे वो temporary chairman या temporary president बनाए गए थे. क्या हो सकता है लिखा temporary chairman?
of Constituent Assembly? Then what should be the answer? अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए, interim president, temporary chairman, temporary president. Yes, good evening, Namo. Welcome to the class. Please answer this question. Yes, Anusha Kansal and Pranshi Govil, you both are right. The right answer is Mr. Sachidanand Sinha. ठीक है, so A is the right answer to this question. ठीक है, और किसी ने D आंसर किया है, so ये permanent president. Yes, Anusha, very good. So the permanent president और second president जो थे वो ये थे, है ना? President या chairman कहीं लिखा हो तो आप उसी हिसाब से आंसर समझ लेना. So that would be the Mr. Rajendra Prasad. Yes, Namo, very good. हाँ, Anusha right. तो आप देख सकते हो. First president was Sachidanand Sinha, and the second president, who was the permanent president, was Dr. Rajendra Prasad from Congress. Vice president generally पूछा नहीं जाता है. Till now, I have not seen any exam asking vice president. But एक दो बार देख लो. H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari was there. But हाँ, ये दोनों मैंने देखा है. I have seen these two being asked in the exams. First president, या temporary chairman, temporary president, इस तरह का पूछेंगे. And permanent president or second president was Dr. Rajendra Prasad. ठीक है? Okay. Now the next one is which of the following was the chairman of drafting committee? Very, very, very important. और ये I think ये काफी you should be knowing it, right? Mr. Sachidanand Sinha, J.L. Nehru, Bhimrao Ambedkar, Sardar Patel. Drafting actually, I think somewhere on these 22 committees. There are many committees in Constituent Assembly, but this was very prominent. सबसे famous committee ये थी drafting committee और इनके chairman थे Mr. Bhimrao Ambedkar. He was also after independence he became the which minister of India? बहुत famous minister बनाए गए थे. What is the name of the ministry? Yes, बहुत सारे लोगों ने option C आंसर किया. So yes, Nat, Pranshi, Govil, Ayush, Anusha, Namo, you are right. कौन से minister बनाए गए थे? Common sense also says, I mean, you should be knowing it. Law minister. Yes. Yes, Namo, very good. And who is the current law minister of India? Actually ऐसे लिखते हैं, Minister of Law and Justice. Mr. Anju Ram Meghwal, and he is a member of parliament from Bikaner in Rajasthan. Yes, Pranshi Govil, Namo, you are right. ये सब पता होना चाहिए, because at least law minister तो पता होना चाहिए आपको. ठीक है. Fine. Let's move on to the next one. Which one of the following was the constitutional advisor in Constituent Assembly? Mr. Nagendra Singh, Justice Fazal Ali, B.N. Rao, Justice H.J. Kania. ये लीगल एडवाइजर भी कभी-कभी लिखते हैं in the Constituent Assembly. Do not put question mark. Be confident of whatever you are answering. Yes, Namo, you are right. Anusha, you are right. Pranshi, you are right. Do not put question mark. The right answer is Mr. B.M. Rao. So C is the right answer to this question. ठीक है. So constitutional advisor या legal advisor जो थे Mr. B.M. Rao थे, ये आपको पता होना चाहिए. ये कौन थे? He is the first CJI है ना. And who was Nagendra Singh? ये मैंने बताया था कुछ दिन पहले एक क्लास में. Who was Nagendra Singh? From India, he had served as the president of International Court of Justice. ठीक है. That is what you should know. है ना? तो ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को. ये दोनों पता होना चाहिए. ये पता होना चाहिए. SCF is Scheduled Caste Federation करके था इनका पॉलिटिकल पार्टी का नाम. ये इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ. और B.N. Rao was an officer, मतलब bureaucrat type something है ना. ये आपको पता होना चाहिए. हाँ, ICJ president रहते, right? हाँ. Now here is the next question, and this is a very tricky question. Please read it carefully, and if you answer me correctly, I will be very happy. But you have to explain the reason why you are answering it. और ऐसे कुछ भी तुक्का नहीं मार देना है, तो हो सकता सही हो जाए, but आपको explain करना है कि आपने ये वाला option क्यों बताया. Because this question tells you the entire thing about Constituent Assembly, the election process, etc. And of course, common sense also plays an important role here. Explain the reason why you are answering it, because I want the reason.
देखो, first of all, whenever you are reading the question, read it carefully. I am asking which of the following is incorrect. यहीं पर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं. Yes, no, very good. हाँ. So it is saying Constituent Assembly was based on universal adult franchise. जैसे अभी universal adult franchise के everyone 18 plus can vote. But 1951-52 election से था 21 plus everyone can vote. Was it there in Constituent Assembly? Constituent Assembly 1946 में बनी है. No, there was no universal adult franchise. यही इसी में तो क्वेश्चन कई बार किया भी गया था कि etc. We are not going in that detail, but there were a lot of judgments where this was challenged. कि Indian Constitution is not a result of universal adult franchise, and that is why it is not legitimate. ये सब बहुत सारे arguments हुए थे. We are not going in that argument. Always remember, इससे पहले कभी we have not seen universal adult franchise. बल्कि we had seen when I was talking about Government of India Act 1935, मैंने separate class लिया था. मैंने बताया था कि your right to vote depends upon your wealth, property. और ये सब philosophy है J.S. Mill की, कभी पढ़िएगा तो. So they were British philosophers. They gave this supporting capitalism and all. कि जिसके पास property जहाँ है सबको वहाँ उसको right to vote होना चाहिए. So I mean, like of course this does not exist today. Of course it is. खैर तो ये तो होगा नहीं. Incorrect पूछा जा रहा है. It was a result of indirect elections. Yes. Their members were elected by the provincial legislatures in British provinces and nominated from princely states. Yes, this is true. अब इसका क्या मतलब हुआ मैं बताता हूँ. Voting age 61st amendment से चेंज हुआ था आयुष 1980s में 87-88 में. ठीक है. 21 से जो 18 हुआ था. खैर, now this is correct. Let me explain. देखो, अब मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश प्रोविंसेस होते थे. जैसे ये यूनाइटेड प्रोविंस है ना, लाइट ब्लू वाला है ना, ये सब जो ब्रिटिश प्रोविंसेस, इसमें से क्या होता था, इनकी अपनी प्रोविंसेस मतलब जो स्टेट्स होते थे उनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, वहां से लोग चुन करके भेजते थे. सो दे यूज्ड टू इलेक्ट फ्रॉम देयर. मतलब आज की हिसाब समझो एमएलए टाइप. एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, आर वोटिंग फॉर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ऐसे समझ लो कि आज के जो एमएलएस हैं उन्होंने स्टेट से वोट करके भेजा. पर जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे ये वाले, इसमें तो राजा होता था, तो राजा इलेक्शन थोड़ी कराएंगे. ऐसे सोचो, किंग विल नॉट कंडक्ट इलेक्शन, किंग विल डायरेक्टली नॉमिनेट. किंग विल जस्ट चूज एंड नॉमिनेट कि ये मेरा मेंबर है, ये जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर बन के. ठीक है, इज इट क्लियर? एंड द प्रोसेस, जो वोटिंग प्रोसेस होता है क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. This process is used today in Rajya Sabha election, president election, and this is a previous year question of CLAT 2023. Ask this question: okay, the president election happens through what? So proportional representation through single transferable vote with secret ballot. This was the answer. ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हुआ था. क्यों? इसलिए कि इनडायरेक्ट इलेक्शन था. एमएलए समझ लो, स्टेट एमएलए ने चूज किया था और जो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट किए गए थे मेंबर्स. सिंगल ट्रांसफरेबल, सी व्हाट यू आर आस्किंग इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई नीड एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स. सो करंटली आई कैन नॉट एक्सप्लेन हियर. जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो एकदम सिंपल प्रोसेस नहीं होता है, बस आई एम जस्ट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, उसमें होता है कि एक लोग प्रेफरेंस लिखते हैं. जैसे मान लो देयर आर 4 कैंडिडेट्स ए बी सी डी. सो जब मैं वोट करूंगा तो सिर्फ एक पार्टी को नहीं, मैं लिखूंगा मेरा पहला प्रेफरेंस बी है, दूसरा प्रेफरेंस सी है, तीसरा प्रेफरेंस बी है और चौथा प्रेफरेंस डी है, लाइक दैट. ठीक है, मान लो कि मेरा जो बी वाला है वो हार गया. ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. देन माय सेकंड वोट विल बी काउंटेड, देन थर्ड वोट. इस तरह होता है प्रोसेस. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, अदरवाइज द एंटायर क्लास विल बी ऑन दिस ओनली. दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बट आप नाम याद रखिएगा. सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पूछेंगे, बट नाम यू शुड नो. So these two were correct. Incorrect was this. Incorrect was asking. So the answer is A. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, if you ask ChatGPT here, that will also answer. Constituent Assembly was not elected by direct vote, so there was no universal adult franchise. जनता जाके वोट नहीं की थी, so the people did not go and vote. Only the elected by MLAs, state MLAs, provincial legislative assembly means MLAs, विधायक जो उस टाइप के है ना. Plus if you talk about princely states, तो nominate किए गए थे. King सीधा जाके nominate कर देते, because king do not believe in democracy in general. ठीक है, so they will not do election, they will just choose कि ये मेरा बंदा ये जाएगा constituent assembly में, like that. ठीक है, so this you should know. So it was partially elected, partially nominated. That is the answer. ठीक है, तो ये था originally 389 seats थे, बाद में बंटवारा when India Pakistan split it became 299.
ठीक है। सो 389 में ब्रिटिश प्रोविंसेस से 292 थे, वो इलेक्ट हो गए थे, एमएलएस इलेक्टेड देम। इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ ना, बिकॉज पीपल वोटेड फॉर एमएलएस एंड एमएलएस आर इलेक्टिंग देम। इसका मतलब क्या हुआ, पीपल आर इनडायरेक्टली इलेक्टिंग देम, है ना, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, लाइक राज्यसभा इलेक्शन टुडे और प्रेसिडेंट इलेक्शन टुडे, दीज आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट इलेक्शंस। प्रेस्ली स्टेट से डायरेक्ट नॉमिनेट कर दिए बिकॉज किंग विल चूज, है ना। और बाकी 4 होते थे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस होते थे, इतना आपको नहीं जानना है, दे वर आल्सो नॉमिनेटेड। ठीक है, जस्ट हैव एन आइडिया। द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज बेस्ड ऑन व्हिच प्लान, कौन से प्लान को फॉलो किया गया था? क्रिप्स मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबैटन, बल्कन प्लान, राजाजी फार्मूला। व्हाट इज द राइट आंसर? बताइए। Yes, Namo, Anusha Kansal, you are the right. The right answer is Cabinet Mission, March 1946. ठीक है, is the right answer. Yes, Pranshi Govind, you are right. देखो होता क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। देखो इसमें देखो कहीं पे वीके पे स्क्रिया मैंने लिखा था, बट प्लीज रिमेंबर the concept was originally given by M.N. Roy. That is the most established fact accepted by the government questions and all, or government agencies. ठीक है, तो अब हुआ क्या कि 1934 में this concept was given by M.N. Roy, then actually Swaraj Party also gave this concepts and all. तो कब एक्सेप्ट किया गया? 1940 में जब अगस्त ऑफर आता है, here it is accepted that okay we will made a war advisory council. अगस्त ऑफर में जब एक्चुअली होता क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 वाज हैपनिंग, ठीक है, एंड वर्ल्ड वॉर 2 में फाइनली दिस पार्टी वन, ये हार गए, ये बात सही है, बट रियलिटी वाज 1940 या 42 के आसपास इन लोगों की हालत खराब थी। सो द अलाइड लीडर्स, है ना, अलाइड में जैसे यहाँ पर ये यूएस है, ये यूके है, इन लोगों की हालत खराब हो गई थी 1940s के आसपास, और दे वर वेरी पावरफुल, एडॉल्फ हिटलर एंड ऑल, जर्मनी एंड इटली, मुसोलिनी, ठीक है। बट सो दैट इज व्हाई 1940 में दे वेंट कि चलो भाई जाओ इंडिया से कुछ बात करो। सो दे हैड सेड कि अच्छा वी विल गिव डोमिनियन स्टेटस, वी विल एक्सपैंड वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एटसेट्रा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी सेट अप। तो अगस्त ऑफर 1940 में ब्रिटिश कहती है ओके वी विल सेट अप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो ये ऑफर इरादा तो करते हैं कि ठीक है हम लोग देंगे एटसेट्रा, बट फाइनली जब कैबिनेट मिशन आता है एंड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 दे एक्चुअली डिसाइडेड टू होल्ड इलेक्शंस, है ना। तो कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से इलेक्शन हुआ था, ठीक है। And now you should think, when the election is done according to cabinet mission plan, do you think British will allow universal adult franchise? कभी नहीं, British never believed in equality, तो देंगे नहीं universal adult franchise, ऐसा सोच लेना, ठीक है। So that is what you should know. It was implemented in the cabinet mission plan 1946, elected through single transferable vote, proportional representation, ठीक है, ये आपको पता होना। Now, है ना, इसमें हो गया done. हाँ, तो यहाँ पे लिखा वोटिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड बाय प्रॉपर्टी एजुकेशन डायरेक्शन व्हिच कुड सॉ द वोटिंग फ्रेंचाइज टेंड टू मच ग्रेटर प्रोपोर्शन। तो पहले जो था कि राइट टू प्रॉपर्टी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे दिया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा बढ़ाया गया इलेक्टोरेट को, बट स्टिल इट वाज नॉट यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज नहीं था। दैट इज व्हाट यू शुड नो, है ना। सो दीस आर द सीट्स एंड ऑल। इसमें कांग्रेस की 208 सीट्स थी, याद रखिएगा, ठीक है। प्रेसिडेंट स्टेट्स में थे 93 नॉमिनेटेड थे, ऑफ कोर्स उसमें मुस्लिम लीग की 73 सीट्स थे देयर, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड नो। इसमें और कुछ जानने का नहीं। टाइमलाइन कुछ है, द इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट टाइमलाइंस आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट की फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी? ये बीएम लॉ काउंसिल 6 दिसंबर 1946 इट वाज फॉर्म्ड एंड फर्स्ट मीटिंग हैपेंड ऑन 9 दिसंबर, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए 6 दिसंबर ऑप्शन में नहीं लिखा है, सो यू कैन गो फॉर 9 दिसंबर 1946, ठीक है। ओके, द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये मैंने बताया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, व्हेन आई वाज टीचिंग दिस, प्रीएम्बल में पढ़ा रहा था कल, because preamble का precursor है objective resolution. It was initiated by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946, है ना, and this was adopted on 22nd January 1947. This objective resolution next month was adopted, ठीक है। unanimously, मतलब किसी ने भी नहीं अपोज किया, all the members agreed to that, जितने भी 299 members थे और या 389 कितना थे, 389 members थे, all agreed, ठीक है ना। उसके बाद एक प्रोमिनेंट ये पूछते हैं कभी-कभी एग्जाम में देखा कि when was national flag, जो saffron white green है, white है ना, वो वाला national flag जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, that was actually the was adopted when, so 22nd July 1947, ये याद रखिएगा, ठीक है। and of course you are aware of this, ये भी पता होगा, Constituent of India was passed and adopted by the and adopted and enacted by the assembly, ठीक है। that is what you should know.
This came into force on 6 January and all. And the first speaker was G.V. Mavlanka. That is what you should know. Now there are 22 committees which we'll discuss in NCERT book. तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ. मैंने आपको बताया in the beginning of the class I told you that in previous year question in CLAT 2025 they have asked questions from NCERT book by giving the passage. Yes. उससे पहले last year they had asked on Jallianwala Bagh, है ना, from NCERT book. This was they had asked about civil disobedience movement last year. तो इसलिए वो NCERT book से भी पूछ रहे हैं. तो इसलिए मैं अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो NCERT book में लिखा उसकी थोड़ा झलक दिखला देता हूँ. ठीक है. So framing the constitution, the beginning of a new era. ठीक है. So this is a chapter from class 12 NCERT. तो इसमें ये है committees associated with Constituent Assembly. तो इसमें जो सबसे फेमस है वो ये वाली है, भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी. Yes, I'm sure you must be aware of that. इसके अलावा एक दो और पता होने चाहिए, जैसे यूनियन पावर्स कमेटी कभी कभी किसी एग्जाम पूछा जाता है जवाहरलाल नेहरू. ऐसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली है ड्राफ्टिंग कमेटी. यू शुड रिमेंबर इट. ठीक है. कभी कभी अगर मान लीजिए टीचर का मूड खराब हो गया तो हो सकता है ये पूछ दें, थोड़ा डिफिकल्ट चाहे तो. ठीक है. फिर एक स्टेट्स कमेटी थी तो भी जवाहरलाल नेहरू की थी. ठीक है. सो दीज आर फंडामेंटल राइट्स के लिए जेबी प्लानिंग कमेटी, माइनॉरिटीज. ठीक है. बट चांसेस थोड़ा कम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. यही पूछेंगे अगर द वेरी लाइकलीहुड इज दे विल बी आस्किंग अबाउट ड्राफ्टिंग कमेटी. ठीक है. ओके. ये हो गया. एक दो चीज और पता होना चाहिए कि वी हैव सीन इट वाज were not elected, जो यहाँ भी लिखा है NCERT book में, not elected on the basis of universal and franchise. यहीं से क्वेश्चन बनता है. ठीक है. Now we have told you that a big section of people were from Congress. So Constituent Assembly के 82 members जो थे वो कांग्रेस पार्टी से थे. This also is a fact. मतलब एकदम रट्टा वो नहीं होती, but इतना पता चाहिए था majority were from Congress. ठीक है. Or more than half. At least you should remember like that. ठीक है. फिर ये सब हो गया, इसमें कुछ और जानने को नहीं है. Linguistic protection and all. तो ये सभी मेजर्स NCERT बुक से है ना, ये आप टेकन. हाँ, फिर स्प्लिट होने के बाद 299 मेंबर्स बचे थे, 300 लिख दिया. इसमें 6 लोगों की सबसे अहम भूमिका है. So 6 people were very much there to ensure the constituent should be actually come up with the entire constitution. हालांकि मेंबर्स तो सारे थे, बट 6 लोगों का स्पेशल नाम दिया. जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद. ठीक है. ये हो गए. फिर 3 और लोग हो गए. चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव अम्बेडकर, चौथे. पांचवा हो गया के.एम. मुंशी फ्रॉम गुजरात, एंड 6th इज अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर. सो देयर वर 6 पीपल एंड 2 सिविल सर्वेंट. सिविल सर्वेंट मींस ऑफिसर. एक है बी.एन. राव, मैंने अभी बताया, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, और अनदर वन इज एस.एन. मुखर्जी, चीफ ड्राफ्ट्समैन. सो ये दोनों ऑफिसर हो गए. सो 6 पीपल और 6 पॉलिटिशियन यू कैन से, एंड 2 ऑफिसर्स were involved in main people were involved. इनका NCERT में नाम लिखा है, इसलिए मैंने आपको स्पेसिफिकली बता दिया. ओके, इज इट क्लियर? यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर हिंदू कोड बिल का डिस्कशन हो रहा है, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट एंड ऑल. ठीक है. इससे रिलेटेड आपने सुना होगा हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 एंड ऑल. इसी में डिबेट वगैरह हो रहा था. यहाँ भीमराव अम्बेडकर सिटिंग है. फिर ये मैंने बता दिया 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड एंड ऑल, है ना. इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, ये सब बात कही थी, and we have already taught in this class, so go and watch it. इसमें मैंने I've already discussed objective resolution. ठीक है. हाँ, अब क्या होता है, देखो NCERT बुक से कुछ चीजें पूछी जा सकती है, वो इस तरह का है, जैसे कि we are not just to copy this statement, this speech was given by whom, because since it is mentioned in NCERT, तो बस आपको पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू. मतलब वो क्या बताना क्या चाहिए स्पीच में. देखो, I hope you are aware, we have done this class, borrowed features of the Indian Constitution, where we have discussed that in Indian Constitution we have borrowed from different places, है ना. कई जगह से हम लोगों ने बोरो किया है, ये बात सही है. लेकिन वो ये बता रही है कि हम लोगों ने ब्लाइंडली नहीं कॉपी किया है, ऐसे नहीं कि बस डायरेक्टली कॉपी किया, बट वी हैव अप्लाइड आवर ओन माइंड. तो ये स्पीच है उनकी, लंबी चौड़ी. ठीक है, इतना डिटेल नहीं जाना, बट ये पता होना चाहिए कि who has given this statement, we are not just to copy, or who has given this speech. So जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, इज इट क्लियर? And we are not just to copy. Okay. I'm just showing the keywords. ठीक है. ये भी उतना कम चांसेस सोमनाथ लहरी के बारे में, बट ये पूछ सकते हैं. I'll tell you one more thing. Everything cannot be discussed. So, हाँ, ये वाला बहुत फेमस स्टेटमेंट है सरदार पटेल का. The British element have gone, but they have left behind the mischief. Mischief मतलब क्या था? बदमाशी, शैतानी, है ना, bad behavior.
and he is referring to separate electorates. So there were debates in Constituent Assembly whether we should continue separate electorates or not. So most of the people said no, we should not separate, have separate electorates for people of different religion, because it will create disharmony or disunite the people. So unity of India will be questioned or compromised, and that is why this should not be there. तो वही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिसे पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया, the British element is gone but they have left behind the mischief, तो सरदार पटेल regarding separate electorates. ठीक है. Now GB पंत साहब ने कहा था separate electorates, I believe separate electorates will be suicidal to the minorities. ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया था GB पंत ने. Okay, so these were prominent personalities. ये आपको बस स्टेटमेंट याद होना चाहिए. Okay, और कुछ लैंग्वेजेस पर डिबेट हुआ था, हिंदी लैंग्वेज वगैरह पे, तो इस पे मैं क्वेश्चन मैंने बताया B343 इज ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, in Hindi is the official language of India and all. Article 343 says, and 14 September 1949 को this was passed, this resolution was passed in Constituent Assembly. इसमें भी काफी डिबेट हुआ था ऑफिशियल लैंग्वेज पर. आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिबेट, बट उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगा आज. ठीक है, सो लेट मी आस्क. यस, हियर इज द क्वेश्चन, प्लीज रीड इट. और ये आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा हुआ है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए. गांधी जी ने कौन सी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए कोशिश की थी? हालांकि करंटली वी डोंट हैव नेशनल लैंग्वेज, वी हैव ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदी. सो गांधी जी वांटेड व्हिच वन टू बी द नेशनल लैंग्वेज? एनीवन? यस, नमो, आयुष, यू ऑल आर राइट. द राइट आंसर इज बी, हिंदुस्तानी. ठीक है, so B is the right answer to this question. Yes, you just not Namo, you all right. चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो. This is also a previous question of a board exam, so I want you to answer. Read it and then answer me. National language, carefully consider this. देखो उन्होंने लिख दिया carefully, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए. Which of the following ideas were advocated by महात्मा गांधी? कभी-कभी यहाँ पर इनकरेक्ट वगैरह लिखा रहता है. अगर ऐसा हो रहा तो यहाँ पे पढ़ना गौर से, पूछ क्या रहा है, ये है क्वेश्चन. ठीक है, सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली. क्वेश्चन मींस दिस इज द क्वेश्चन एंड दीस आर द स्टेटमेंट्स. क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कभी-कभी वहां पे इनकरेक्ट लिखा होता है, आपका सारा आंसर गलत हो जाता है. सो बी केयरफुल एंड आंसर मी. देखो, अगर आपको एग्जाम में बैठो आपने नहीं पढ़ा है तो आप कैसे आंसर करोगे? आई विल टेल यू हाउ टू आंसर इट. देखो, देयर आर four statements and every option has 3 statements. 3 is correct. इसका मतलब इस 4 में से सिर्फ एक गलत है, 1 is wrong. Is it clear? Is it clear? पहले ये देखो, मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज एग्जाम हॉल में कैसे सोचना अगर आपने नहीं पढ़ा, इफ यू हैव नॉट रेड इट. इज दिस क्लियर कि सब में 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि बस 4 में से कोई एक अगर हम गलत पकड़ लेंगे, सो आई विल कैच द आंसर. And I do not know, let's say I have not read it, and I am sitting in the exam hall. तो क्या करेंगे? अब देखो, गांधी जी का आइडियाज क्या था? Think about it. He was broad, so he used to think comprehensively. broad, है ना? Narrow minded नहीं होंगे. He will be talking about unity, truth, peace, non-violence. Unity की बात करेंगे. Broad minded होंगे. तो ये बता ये रहे, शुड बी हिंदुस्तानी लैंग्वेज विच शुड नाइदर बी संस्कृतराइज्ड हिंदी नॉर पर्शियनाइज्ड उर्दू. क्या मतलब है कि ऐसा नहीं हो कि सिर्फ स्कॉलर को आए, कॉमन मैन. दिस इज रेफरिंग टू कॉमन मैन. यस और नो? कि आम आदमी समझ ले, इतना एकदम ठेठ हिंदी हो या एकदम ऐसी उर्दू हो पर्शियनाइज की समझ में नहीं आ रहा है, फारसी बोल रहे हैं, सिर्फ शायर को समझ में आया. सो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी एक लैंग्वेज होनी चाहिए जो एकदम मतलब सिंपल लैंग्वेज हिंदी या सिंपल लैंग्वेज उर्दू के मिक्सर. So it appears कि हाँ ऐसा कुछ बोला होगा गांधी जी ने. Yes, it matches with the idea. It should not admit words from the different languages. अगर आपको थोड़ा भी पता होगा, I hope you are aware, उर्दू का अपना कोई वर्ड नहीं होता. I'm sure you must be aware. It is a language which is a result of language borrowed from the words of different languages. I hope you are aware of it. So उर्दू ने पर्शियन से वर्ड लिया है, टर्किश से वर्ड लिया है, संस्कृत से वर्ड लिया है, हिंदी से वर्ड लिया है, इंग्लिश से वर्ड लिया है. ठीक है, ये बात तो आपको पता होना चाहिए, है ना? तो ऑफ कोर्स अब ये बोल रहे हो कि अदर लैंग्वेज से नहीं, और ये गांधी जी के आइडियाज के अगेंस्ट है, बिकॉज़ हियर यू आर ट्राइंग टू बी नैरो. कि सिर्फ मेरा वाला जो वर्ड है वही चले, किसी को बाहर से नहीं हम अडॉप्ट करेंगे. यस,
So it means chances are that this will be wrong. Second, the national language was developed into rich, powerful instrument capable of expressing thoughts and feelings. ये तो अच्छी बात है. What is wrong with that? ठीक है, ये भी सही है. It should unify Hindus and Muslims and people of North and South India. अब देखो गांधी जी की बात करेंगे कि नहीं. गांधी जी must be talking about peace, unity, etc. तो ये भी सही होगा. So the answer was 1, 3 and 4. So the answer is C. ठीक है. Now why I'm telling you कि एग्जाम में think कैसे करना अगर इस तरह क्वेश्चन आए. जितने भी लंबे क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं. These are very easy questions. अब देखो एनसीईआरटी बुक में लिखा है neither Sanskritized Hindi nor Persianized Hindu, but Hindi, Urdu, but a combination of both. यानी simple language हो, है ना? Congress had accepted Hindustani and felt that a blend of Hindi and Urdu in mixture होना चाहिए. बहुत ठेठ हिंदी और बहुत गाढ़ी उर्दू नहीं बल्कि बीच का समवेत. इस तरह की भाषा हो, है ना? It could unify Hindus and Muslims, unify North and South. ठीक है? Okay, it was a composite language enriched by the interaction of diverse culture and had incorporated words and terms from very different sources. इसका मतलब ही है कि ये वाला गलत है ना? गांधी जी क्या कह रहे हैं? ऐसे लैंग्वेज हो तो डिफरेंट सोर्सेस, डिफरेंट कल्चर से उसको लिया गया, बोरो किया गया. ठीक है, इज इट क्लियर? और आप यकीन मानो इस तरह का आपने, मैं बता दूं क्यों रहा हूं, बिकॉज़ क्लैट 2021 में क्वेश्चन आया था गांधी पीस प्राइज पर, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन उससे बन जाता. इसी लॉजिक से अगर आप इससे सोचते कि गांधी जी नॉन वायलेंट पीस की बात करते तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे निकल जाता. सो ऑलवेज थिंक, कीप कॉमन सेंस विद योरसेल्फ, and believe me, you will be able to get extra 1 or 2 questions. और वही गेम चेंज कर देता है. ठीक है, so that is how you have to think. Now let me ask this question. Please answer me. अभी मैंने बताया 5-10 minutes back. This is also a previous year question of board exam, so I'm expecting you to answer. Separate electorates will be suicidal to the minorities also. किसने कहा ये स्टेटमेंट? Yes, Pranchi Gobal Yoya's done. GB Pant ने. सरदार पटेल ने क्या कहा था कि British has left, but they have left the mischief. और वो mischief separate electorates की बात कर रहे थे ना. और that is what you should know. So here the answer is C, है ना. तो C1 minorities के लिए भी अच्छा नहीं होगा. That is what GB Pant had said. Okay. So this is all about today's class. I hope you would have liked the session. Please press the like button, subscribe to the channel. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.